Good morning class. Nowadays we are studying chapter 7 percentage and we are doing exercise 7C. Yesterday we have completed question 4 and question 5. So today we will continue through question 6. Question is 60% of the total students in a school come on foot. एक स्कूल है जहाँ पर टोटल स्टूडेंट में से 60% स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं पैदल चलकर. देयर आर 950 स्टूडेंट्स इन द स्कूल. टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल इज 950. मतलब एक स्कूल में टोटल 950 स्टूडेंट हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट कम ऑन फुट टू द स्कूल? Students, in this question, you have to find out the total number of students who come to school on foot. मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैदल चलकर स्कूल आते हैं. Students, come to solution. First of all, you will write statement like this. According to the question, total student in the school is 950. So, you will write here 950. एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स 950 हैं. Now 60% of the total students in a school come on foot. मतलब टोटल स्टूडेंट में से 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैदल चलकर स्कूल आते हैं. So students, you will write here students come on foot to the school is equal to 60% of total students. Now students, you know total students in the school is 950. So you will write here 60% of 950. मतलब 950 स्टूडेंट में से 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैदल चलकर स्कूल आते हैं. स्टूडेंट्स, in this question, we have to find out the 60% of 950 because 60% of 950 students come to school on foot. Students, for that we will multiply 60% by 950. Now students, 60% it can be written as 60 divided by 100 and then we will multiply by 950. Students, according to the question, 60% of the total students come to school on foot. So total student is 950. So 60% of 950 student come to school on foot. मतलब 950 स्टूडेंट में से 60% स्टूडेंट स्कूल आते हैं पैदल चलकर. स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट दी 60% ऑफ 950. तो हमें 950 का 60% निकालना है क्योंकि 950 स्टूडेंट में से 60% स्टूडेंट्स पैदल चलकर स्कूल आते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई 60% बाय 950. नाउ 60% कैन बी रिटन एज 60 डिवाइडेड बाय 100 देन मल्टीप्लाई बाय 950. स्टूडेंट्स, वी विल कैंसिल आउट 1 0 फ्रॉम 60 एंड 100. 0 0 कट गया. अगेन वी विल कैंसिल आउट 0 फ्रॉम 950 एंड 10. 0 0 कट गया. Now students, 6 into 95 is equal to 570 students. 570 students come on foot to the school. मतलब 570 students पैदल चलकर स्कूल आते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर.
570 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैदल चलकर स्कूल आते हैं। स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन 7. क्वेश्चन इज देयर आर 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास. टोटल चिल्ड्रन इन द क्लास इज 40. एक क्लास में 40 चिल्ड्रन पढ़ते हैं. 60% ऑफ देम आर बॉयज. मतलब 60% ऑफ 40 चिल्ड्रन आर बॉयज. स्टूडेंट्स 40 चिल्ड्रन में से 60% चिल्ड्रन बॉयज हैं. हाउ मेनी आर बॉयज, हाउ मेनी आर गर्ल्स. स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन you have to find out the total number of students who are boys and number of children who are girls. Now students come to solution. First of all, you will write statement like this. According to the question, total children in the class is 40. So you will write here 40. Now 60% of 40 children are boys. मतलब 40 children में से 60% children boys हैं. So students, you will write boys in the class is equal to 60% of 40. Now students, in this question, we have to find out the 60% of 40. So we will multiply 60% into 40 because it say that 60% of 40 children are boys. मतलब 40 children में से 60% children boys हैं. So students, इस क्वेश्चन में हम लोगों को 40 का 60% निकालना है. So we will multiply 60% into 40. Now students, 60% can be written as 60 divided by 100 into 40. Students, we will cancel out 1 0 from 60 and 100. 0 0 कट गया. Again we will cancel out 1 0 from 10 and 40. 0 0 कट गया. Now 6 into 4 is equal to 24 boys. Students, number of children who are boys is 24. मतलब 24 children boys हैं. Now students, we have to find out the number of children who are girls. So you will write here girls in the class is equal to, students, as you know, total children in the class is 40. So you will write here 40. Now out of 40 students, 24 students are boys. So students, remaining students must be girls. So we will do 40 minus 24. 40 minus 24 is equal to 16. 16 girls. Students, as you know, total children in the class is 40 and out of 40 students, 24 students are boys. So students, remaining students must be girls. So we will do 40 minus 24 is equal to 16 girls. Now students, 24 students are boys and 16 students are girls. This is your answer. Students, note down your homework. Practice exercise 7A, question 3 to question 5 in your rough copy. Students, you have to practice exercise 7A, question 3, question 4 and question 5 in your rough copy and show me tomorrow.